Hi students, I wish you a very good morning and welcome back our online class Maths 6th standard. Students, today we are going to start that revision, the first revision, because very soon we are going to appear that second test of this academic year. So we have to do the revision. Okay. So students, today we will do that third chapter playing with numbers. So it will come on your exam. So we will do once again revise. So let us start the students. Some questions I have written there, some fill in the blanks and some subject types questions, and we will solve it in this video. So look at students here. I have written that first bit, that is the fill in the blanks. In your exam, fill in the blanks it will come, multiple choice it will come, yes, and state true or false it will come. Solve the problems like LCM, HCF, like that problems it will come. Very carefully you have to read the questions and you have to write the answer. So now students, we will solve some questions here, like that you have to be practicing your book also. First question students, first fill in the blanks, you should see the bit number. First question, the smallest prime number is dash. First of all, you have to get the idea what is that prime number. Now prime number means if the number having only two factors, one and itself, that is called as a prime number. Okay? हमें in the last time means we have studied that whenever I have taken that class, at that time I have explained very thoroughly what is the definition of prime number. Prime number किसको बोलता है ना, जो प्राइम नंबर का दो फैक्टर है, मतलब वो नंबर एक है, एक वन इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, वन एंड दैट नंबर इटसेल्फ इफ इट इज देयर एक्सेप्ट दिस टू फैक्टर्स, इफ देयर इज नो अदर फैक्टर्स, देन हमें वो नंबर को क्या बोलेंगे, हमें प्राइम नंबर. फॉर एग्जांपल 2 3 5 7, yes, 11 13 17 19 23 29, these are the examples of what prime numbers. लेकिन सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है? What is that? First starting prime number is 2. So your question asked, what is that smallest prime number? The smallest prime number is क्या है? 2. ठीक है students? So we can go get that idea students about that. So next I will change the name, that is क्या है? 2. Second question students, the smallest composite number क्या है? First of all, you have to get that what is that composite number. Do you have idea? Yeah, right. Composite number means if that number having more than two factors. If the two factors, then it is prime number. If more than two factors, that is called as a composite number. ठीक है? Suppose 2 is a prime number, so let it, because it has two factors. 3 also is a what is that prime number, and it is also having that what are two factors. But what about 1? 1 is not a prime number, not a composite number, because it is one of the special number. So next we will go for the 4. 4 क्या है? 4 having the how many factors? How many? 1 2 and a 4. So 3 factors are there. So सबसे छोटा composite number is कौन सा है? 4 है, because it has 3 factors. So hence it is a composite number. And if it is a composite number, it is also smallest composite number. ठीक है? So what is that? The smallest composite number is 4. The smallest odd number. Do you know the students what is that odd number and even number? Yes. If a number is divisible by 2, then it is called as a even number. If a number is not divisible, exactly not divisible by 2, that is called as a odd number. For example, 1 3 5 7 9 11, these are the odd numbers. ठीक है? So the smallest odd number is how much? That is the 1. 1 is also one of the odd numbers. The smallest even natural number. So what is that even number? Even number means 2 से divisible, और unit place में 0 2 4 6 8 रहेंगे तो वो भी even number होता. In general definition क्या होता? If that number is divisible by 2, then it is called as a even number. So सबसे छोटा कौन है? The smallest even natural number is क्या है? 2 है. ठीक है? Students, one thing I have to say that suppose if I will divide with 0 with the
what is that 2. Okay, what is that answer will come. If 0 is the smallest even number, if somebody will say what is that sir, we'll check. So 2 0 जा क्या है 0, ठीक है. सो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या है ना 0. क्यों 0 है, क्योंकि 0 also divisible by 2, ठीक है. सो not 2, we can write it is 0 because 0. But question what is asking the smallest even natural number, लेकिन ये जो नंबर दे दिया तो उसको इट इज नॉट ए नेचुरल नंबर, ठीक है. सबसे छोटा नंबर इवन नंबर इज 0, लेकिन इधर क्वेश्चन पुट कर रहे हैं सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन है. तो सबसे उसका बाद में क्या आएगा 2 आएगा. तो नेचुरल नंबर 2 इज नेचुरल नंबर, 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर. डिड यू अंडरस्टैंड फ्रेंड्स? फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गेसिंग दैट 2, बट एक्चुअली उससे छोटा भी नेचुरल नंबर है. क्या है ना 0 है, लेकिन 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर. सबसे छोटा इवन नंबर इज देयर दैट इज 0, बट 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर. दैट्स व्हाई 2 इज 2 इज इवन एंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, ठीक है. नेक्स्ट 1 इज नाइदर, क्या है कौन सा है 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर ए कंपोजिट नंबर. सो वी कैन राइट प्राइम नंबर. हमें 1 को प्राइम नंबर नहीं बोल सकते कि कैसे भी 1 भी कंपोजिट नंबर नहीं बोल सकते, कंपोजिट नंबर, ठीक है. So these are about the figures of students. Now second is students find the LCM of the following. Here some LCM given, some numbers given, we have to find out that LCM. LCM का मतलब least common multiples, ठीक है. By the two methods we can do that, and first of all I will do that one method, first solution. If you do that like 60 comma, you can do here 60 comma 72, like this method you can do, और प्राइम फैक्टर्स मेथड करके भी कर सकते हो. सो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या फर्स्ट क्वेश्चन का 2 30 जा 2 36 जा 2 15 जा 2 18 जा 3 5 जा 3 6 जा, ठीक है. ये तो प्राइम नंबर हो गया, इसको इतना ही रख लो. देन एलसीएम इज इक्वल टू all we can multiply 2 into 2 into 3 into 5 into 6, क्योंकि प्राइम नंबर हो गया मतलब ये 6 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं. 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 5 जा 60, ठीक है. 12 5 जा 60, 66 जा 36 660. So the LCM is equal to 60 and 72 is equal to 360. Second also we can do students by that same method. 20 34 एंड 60 में कैसे एलसीएम लेंगे, ऐसा लाइन मारो. सो 2 से डिवीजन कर सकते हैं, 2 10 जा 2 17 जा एंड 2 30 जा. सो नाउ वी कैन डू 2 से 2 5 जा 2 17 ऐसा रहेगा 50. सो नेक्स्ट 5 से कर सकते हैं 1 जा 17 एंड 3 जा. नाउ प्राइम नंबर से दे आर बिकम. सो नाउ वी कैन डायरेक्टली राइट द LCM, ठीक है. LCM is equal to how much will come right on the friends. I will draw here to here 2 into 2 into 5 into 17 into 3, ठीक है. Now 17 3 जा 51 51 2 जा 51 2 जा 2 1 जा 2 112 and 10 जा मतलब 1120 होगा एलसीएम. 1120 होगा उसका एलसीएम. सबको मल्टीप्लाई करना है इधर से अप टू हियर यू हैव टू मल्टीप्लाई, ठीक है. नाउ स्टूडेंट्स वी हैव टू डू दैट other part of that other objectives other given that I will show you, I will tell you about that, ठीक है. Now look at here students, start with find the missing numbers. Here some three diagrams it has given of factors of that number. So we have to different way how we have to do that. Students, we can do this difference and some numbers also we have to write in your exam, but here I have not written how we will do that in difference. So look at here students, I can write it how. Here only, here not there, so I will write here 2, here I will write 40. याद रखो क्योंकि ये फिर एक कंपोजिट नंबर है इसलिए 2 है तो इसीलिए ये 2 लिखा इधर लिखा 40 42 जाए.
तो इधर सिमिलर है, फिर इधर 2 लग सकते, 2 20 जा, ठीक है। अभी इधर क्या कर सकते, इधर 2 लग सकते, इधर 10 लग सकते, और इधर 2 एंड इधर 5 जा, मतलब 8 2 5 जा 10, 2 10 जा 20, 22 जा 40, 42 जा 80। ये एक मेथड है। दूसरा मेथड में हम कैसे कर सकते स्टूडेंट्स? ओके, वी कैन डू 16, we can do how what you can do 8 5 also we can do 4 into 10 we can do 4 into 10, ठीक है, सॉरी 4 into 20, ठीक है। हम ऐसे कर सकते 4 into 20 करेंगे तो ये 2 2 हो जाएगा, ठीक है। कोई दूसरा बच्चे ऐसा कर दिया तो भी हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी क्या करेंगे इसको, हमें उसको 2 लिखेंगे, इधर 20 लिखेंगे, 10 लिखेंगे, और इधर 2 इधर 4, ठीक है। अभी जो है मतलब अभी जो निकालेंगे अभी 80 को कैसे निकालेंगे, जो निकला मतलब ये इसको टोटल हम लिखेंगे ना, ये आ जाएगा हमारा प्राइम फैक्टर्स। ओके, सो कैसे होगा वो, ये 2 है, ठीक है, ये 2 है, 2 into 5 है, ठीक है, इधर 2 है into 2 है, मतलब हमें आराम से लिखेंगे तो मींस with this suitable way if you write like this it will come into 5, so 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 5 जा 8। इसको देखेंगे हम क्या करेंगे, ये दोनों आया, ये आया और ये भी आएगा, व्हाट इज दैट, 2 इज राइट, 2 into 2 2 into 2 into 2 into 5 into 2, this also become 7. So this way we have to do that 3 diagrams. I hope you have understood it. Thank you all of you. Have a nice day.